Hey guys, welcome you all. My name is Surya sir, and today in this particular video we'll discuss about the list of law entrance exams for 2023 and 24. कहने के लिए there are lot of law entrance exams guys, but here I picked some of the law entrance exams जिससे आपके करियर में बहुत सारी opportunities मिल सकती है. Yes guys, why these all law entrance exams? Because here you can get the top colleges, and through top colleges you will be placed in the top legal firms and the top notch companies. So watch this particular video till the end, and guys, forget about which entrance exam, which college after this video. Forget about the career options, and also don't ask right field or not and what exactly placement will get. Guys, right field or not, I already made the video. Law career, this is the right field or not, and the placement stats we'll discuss in this particular video. So if you are in graduation or you are graduate, then guys you can prepare for all these respective entrance exams, so stay tuned with me. And before moving further guys, we have launched the batches. If you want a preparation for MH Law CET, DLLB, BHU, NLSAT, AIELET and even the LSAT, then guys you can start preparation with us. You will get all these features. You will also get preparation for the selection process criteria, either they include VAT, PI or the GD section. So let's target all the top notch institute. You can also join our classroom sessions at Mumbai. Call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai and Dadar Center. Pan India students, you can interact live with us, so call on 8228581455, and you can also visit our website manualredu.com/law entrance for all the pre-recorded stuff. So first of all, the best entrance exam, the MH Law CET 3 years. Yes guys, MH Law CET 3 years. Now for 3 years undergraduate program, that is nothing but the LLB degree or the Legum baccalaureates for admission to Maharashtra based top colleges only. Yes guys, Maharashtra based colleges के लिए आप try कर सकते हो MH Law CET 3 years. Now here all students can participate. Now as it is the state level exam, but yes, candidate from the other state can also apply. Now more than 145 plus colleges are there, and approx 60,000 plus seats are there, okay, for the law 3 years. And look at the competition guys, 68,870 plus candidate appear each year. And if you talk about the exam pattern, then more completely online, computer based test is there. Medium English and Marathi, English medium में भी होता है and Marathi medium में भी होता है. Now questions 150 total questions, time duration is 120 minutes. Marking system, the best thing is there is no negative marking system, +1 and 0. And cutoff to get entered into the top colleges such as the GLC, AILET or Siddharth College, then guys you have to target 120 plus out of 150. The placement at early stage 8 to 10 lakh per annum, and look at the fee structure, 20,000 to 1.2 lakh if you talk about the unaided colleges, and 20,000 if you talk about the aided colleges. Yes guys, so definitely you will get the best ROI in the Maharashtra based colleges. So first of all, target the Maharashtra based colleges, and if you are looking for some other, then you can prepare for the DU LLB, the Delhi University. Yes guys, for admission to Faculty of Law department under Delhi University, and where the Faculty of Law has 3 centers. The first one, Campus Law Center, thereafter Law Center 1 and Law Center 2. Overall, if you talk about the seat intake, then 2,800 plus seats are there, and the number of aspirants, 17 to 18,000 plus aspirants appear each year. Guys, there are 3 centers as we discussed. And if you talk about the exam pattern, then more it is completely online based, computer based exam will be there. Medium only English, 100 questions will be there for 120 minutes, and marking system says +4 -1, that means negative marking hai yahan, and that's why you should target the safe score of 300 plus. Yes guys, out of 400 you should target 300 plus to get entered into the LC1, LC2 or the CLC. Placement stat की बात करें, then guys, first of all go to the official website of Delhi University and see the alumni from the Delhi University. Guys, you will see High Court के judges, Supreme Court के judges all went through this college. 8 to 10 lakh per annum, काफी कम फिगर दिख रहा है यहाँ, but don't worry at all guys. Once you will grab the experience, definitely you will get a lot more figures. Approx 20,000 only the fee structure, so that's why we'll give you the best ROI. Now next one, दी BHU LLB. गाइस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से बेस्ट लीगल प्रोफेशनल्स निकलते हैं. एंड यस गाइस, यू हर्ड इट राइट, यहाँ सबसे बेस्ट लीगल प्रोफेशनल्स बनते हैं, और ये बनाती है BHU फैकल्टी ऑफ लॉ, द विधि महाविद्यालय. यस गाइस, फॉर एडमिशन टू फैकल्टी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट अंडर BHU, यहाँ सीट्स है 286 एंड ऑलमोस्ट 12,000 to 13,000 प्लस एस्पिरेंट्स अपीयर ईच ईयर. एंड गाइस, डोंट फॉरगेट BHU LLB की ऑफिशियल वेबसाइट देखना है आपको, बिकॉज it has the age criteria for the LLB program. Now maximum age should not be exceed to 30 years as on
ड्यूरिंग एडमिशन, जब भी एडमिशन प्रोसेस करने जाओगे योर एज शुड बी बिलो 30। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है, यू कैन सी देयर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न। मोड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होता है। ऑफलाइन के लिए देर आर 45 सेंटर्स एंड ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए देर आर 115 सेंटर्स। मीडियम कंप्लीटली इंग्लिश। क्वेश्चन 100 questions will be there. Time duration will be 120 minutes. Marking system +3 and -1. That means out of 300 you will get the score. So you have to target 220 plus to get an easy entry into the BHU. And if you talk about the placement stat, then 10 lakh per annum का पैकेज तो आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि BHU का जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो इतना हाई नहीं होता, बिकॉज गाइज यहाँ की जो फैकल्टी है उन फैकल्टी के थ्रू आपको जो करियर के ऑप्शंस मिलने वाले हैं, देन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स चूज द फर्दर स्टडी प्रोग्राम। वो अपने करियर में एकेडमिक्स के लिए जाते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए जाते हैं, जुडिशियरी सर्विसेज के लिए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो कम रहता है, बट डेफिनेटली गाइज यहाँ पैकेज आपको मिलता है। अप्रॉक्स फीस बहुत कम है गाइज, 6 to 10,000 ओनली। और क्या चाहिए? द बेस्ट ROI you will get over here and even the best knowledge of the legal professional of the legal studies. So BHU should be your target, but don't forget यहाँ seat intake काफी कम है, so preparation आपको वैसा ही करना होगा। Now let's talk about the AILET, and it is nothing but the All India Admission Test conducted by the Symbiosis Law School for 60 seats at SLS Pune. The mode of exam is completely online. Medium is English. 2 subjective questions are there for 40 marks, and 10 MCQs will be there for 20 marks. 1 psychometric test will be there for 10 marks, and selection process criteria, इट इंक्लूड्स द पर्सनल इंटरव्यू जहां आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। सो आपके कंपोजिट स्कोर के थ्रू आपको एंट्री मिलने वाली है। एंड नाउ द PI विल बी लास्ट अप टू 6 to 8 मिनट्स। ओके, इसके बीच में हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन विल बी 105 मिनट्स फॉर दिस एग्जाम। प्लेसमेंट स्टार्ट की बात करें देन गाइस 16 लाख पर एनम का पैकेज आपको इजीली यहां से मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट सिम्बायोसिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन इंडिया अमंग ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। एंड अगेन इफ यू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी देन गाइस यहां कंप्लीट एक्सपोजर आपको मिलने वाला है। फीस विल बी हाई 8 to 9 lakh फॉर 3 years। यस गाइस, फीस यहां हाई है। एंड डोंट वरी अबाउट द फीस बिकॉज it ranked 9th according to NIF in the field of law. So that's why आपको ये टारगेट करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्लेसमेंट स्टैट्स आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले गाइस। एंड इवन इंटरनेशनल एक्सपोजर टू, आप इंटरनेशनल फर्म्स में भी यहाँ से काम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन द NLSAT। NLSAT नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, NLSIU की तरफ से ये एक एग्जाम है। नाउ ऑल द NLUs एक्सेप्ट द CLAT, बट यस NLU बेंगलुरु ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, दैट इज 3-year प्रोग्राम, एंड फॉर इट हैज 60 सीट्स। इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न देन मोड इज कंप्लीटली ऑनलाइन, मीडियम इज इंग्लिश, 75 MCQs will be there for 75 marks, and there is negative marking system of 0.25 subjective question, then 60 marks के लिए आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल टाइम ड्यूरेशन विल बी 2.5 hours, एंड सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है जहां आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, सो कंपोजिट स्कोर के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलने वाला है। प्लेसमेंट एंड फीस की बात करें देन गाइस फीस 9 lakh फॉर 3 years, अप्रॉक्स 9 lakh, एंड प्लेसमेंट स्टैट्स 14 to 15 लाख पर एनम। ऑल्दो ये एक नया प्रोग्राम है, बट डोंट फॉरगेट द ट्रेंड ऑफ CLAT, द BLLB प्रोग्राम। सो सेम पैकेज आपको यहाँ भी मिलने वाला है गाइस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज NLU, द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एंड द बेस्ट NLU, द फर्स्ट रैंक होल्डर ऑलवेज। ओके गाइस, सो ये आपको बेस्ट पैकेज देने ही वाला है। सो यू कैन ऑल्सो टारगेट फॉर द नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी। अप्रॉक्स 2000 to 3000 कैंडिडेट ट्राई करते हैं। ओके, द ट्रेंड विल गो अप ईयर बाय ईयर। नाउ नेक्स्ट वन द LSAT। इफ यू आर लुकिंग फॉर द सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस जो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस है, देन देयर आर 85+ such colleges where you can get entry after cracking the LSAT India exam, the law school admission test. Yes guys, LSAT India, now this exam will be accepted globally. Okay, so आप target कर सकते हो इसे। was developed specifically to be used by law colleges in India, the LSAT India trademark. Okay, and these all are the content. Mode online computer based exam होती है। Medium completely English. Question will be similar to 92 MCQs. Approx 92 questions आपको मिलने वाले हैं। Time duration 140 minutes, and the marking system +1 and 0. Now let's talk about the cutoff. So guys, you will receive a scale score between 420 to 480, a score band as well as percentile, और आपको मिलने वाला है रैंक। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका एक स्कोर जनरेट होने वाला है, एंड यू विल गेट एडमिशन इनटू द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सच एज द OP जिंदाल, जो आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट पैकेज देने वाला है। 16 लाख पर एनम, यस गाइस, द स्टार्टिंग पैकेज, एंड द अप्रॉक्स फीस विल बी 12 lakh to 15 lakh फॉर 3 years। ओके, सो फी स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली ये काफी
high structure है, but definitely guys you will get the best placement over here. So these all are the top colleges guys you should target. First of all entrance exam आपको मैंने बता दी है, कट ऑफ, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, प्लेसमेंट पैकेजेस क्या होने वाला है, एंड इवन द फी स्ट्रक्चर. नाउ डिसाइड फॉर विच एंट्रेंस एग्जाम यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन. ओके, सो प्रिपरेशन के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है गाइस. क्लासरूम कोचिंग भी स्टार्टेड एट मुंबई. कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर्स एंड बुक योर सीट. पैन इंडिया स्टूडेंट्स यू कैन कॉल ऑन 8828581455. एंड इफ you have any doubts and queries in your mind, then guys don't worry at all, ask me in the comment section. If you like the video, hit the like button and do share to all of your friends. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all from my side. All the best for your career. See you in the next video.